श्रीदक्षिणामूर्ति अष्टकं व्यासकृतं। श्रीव्यास उवाच श्रीमद्गुरो निखिलवेदशिरो निगूढ ब्रह्मात्मबोधसुखसान्द्रतनो महात्मन् श्रीकान्तवाक्पति मुखाखिलदेवसङ्गं स्वात्मावबोधकपरेश नमो नमस्ते। सान्निध्यमात्रमुपलभ्य समस्तमेतदाभाति यस्य जगदत्र चराचरं च चिन्मात्रतां निजकराङ्गुलिमुद्रयाय स्वास्यानिशं वदति नाथ नमो नमस्ते। जीवेश्वराद्याखिलमत्र विकारजातं यत् स्थितमनन्तसुखे च यस्मिन् येनोपसंहतमखण्डचिदेकशक्त्या स्वाभिन्नयैव जगदीश नमो नमस्ते। यस्वां श जीवसुखदुःखफलोपभोग हेतोर्व पूष्पि विविधानि च भौतिकानि निर्माय तत्र विशता करणैः सहान्ते जीवेन साक्ष्यामत एव नमो नमस्ते। यत्पुण्डरीकगत चिन्मणिमात्मरूपं यस्मिन् समर्पयति योगबलेन विद्वान् यः पूर्णबोधसुखलक्षण एकरूप आकाशवद्विभुर्मेष नमो नमस्ते। यन्मायया हरिहरद्रुहिणा बभूवुः सृष्ट्यादिकारिण इमे जगतामधीशाः यद्विद्यैव परयात्र हि वश्यमाया स्थैर्यं गता गुरुवरेश नमो नमस्ते। श्रीपुंनपुंसक समाह्यलिङ्गहीनो यास्ते त्रिलङ्गक उमेशतयाय एव सत्यप्रबोधसुखरूपतया त्वरूप वत्वेन च त्रिजगदीश नमो नमस्ते। जीवत्रयं भ्रमति वै यदविद्ययैव संसारचक्रैः दुस्तरदुःखहेतौ यद्विद्ययैव निजबोधरतं स्ववश्य विद्यं च तद्भवति साम्ब नमो नमस्ते। इति श्रीगुरुज्ञानवसिष्ठज्ञानकाण्डस्य द्वितीयपादे प्रथमाध्याये श्रीव्यासकृत दक्षिणामूर्ति अष्टकम्।